Now what we will do is in this lecture, basically we'll try to cover a very simple life cycle and life cycle follow through of an Android application. We will see that once you develop an application, what are the various stages of that application, how each of these methods within the life cycle that we just discussed in the previous class, how these methods are basically being covered. For example, when you start an app शुरू करने के बाद उसकी onCreate event, onStart event, onResume event, these are various different events that get executed. तो ये events किस तरह से trigger हो रहे होते हैं, ठीक है? So we will try to cover these events. So we see that how these basic events are being triggered and being performed. If you're here for the first time, please don't forget to visit my page and subscribe the channel. You will find that on my channel there are more than 500 video lectures based on PHP, Mail scripting, Maya embedded language, 3D graphics, from developing HTML, CSS, JavaScript to working on Android, Photoshop, multimedia technology, and so on and so forth. So these tutorials will be very helpful and very productive for you. So don't forget to subscribe, hit that bell icon, and receive notifications regularly. Okay, so let's just come back into the code. So you start an Android Studio project. Within our Android Studio project, we go on to the new project. Once you come onto the new project, again, it will ask you which activity you want to perform. I will go from base empty activity. I think that would be fine. So we will start an empty activity, click on next. Again, it will ask me my application name. So I will say BS Software Life MOR underscore activity activity life CYCLE cycle. Okay, again, so do ensure that your project folder or package name, sorry, is not set to example but to something else. Now remember, when we work with Android, we are developing Android app. For this purpose, the main goal is कि हम आगे चल के Android app को deploy भी करें और users को launch भी करें. उसके लिए हम Play Store पे भी काम करेंगे कि यार ये जो ऐप आप बना रहे हो इसको Play Store पे अपलोड कैसे किया जाए, और इनफैक्ट आगे चल के ये आपके प्रोजेक्ट्स में हिस्सा भी होंगे कि जो बाकी के असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम आप सब बच्चों को वो एक्चुअली Play Store पे ऐप्स अपलोड करनी है, भले हेलो वर्ल्ड ही क्यों ना हो. तो डू इंश्योर कि एवरी स्टूडेंट डेवलप्स एन ऐप प्रॉपर्ली जो असाइनमेंट्स की थी, और उसको अलग अलग सेव करके रखें. और आगे चल के मैं होपफुली नेक्स्ट वीक, ज्यादा लेट भी नहीं, नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू सी कि हम इन एप्स को कैसे फाइनल एपीके में ले आए, और उस एपीके को फिर हम प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट कैसे बनाए डेवलपर का, और डेवलपर अकाउंट्स बना के फिर हम कैसे अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करें. फॉर गूगल प्ले स्टोर यू डू नीड $25 पर लाइफ टाइम. एक दफा लाइफ टाइम की $25 की फीस जरूर है, ठीक है. तो वी विल सी दिस के वेदर यू आर अपलोडिंग ऑन योर ओन अकाउंट, यू विल बाय नीड टू परचेज दैट. $25 ज्यादा नहीं बनते, आई थिंक 4-5 हजार पे बनेंगे इफ यू कैन परचेज दैट. अदरवाइज फिर ये होगा कि क्लास में हम पूरी क्लास का एक अकाउंट भी बनवा सकते हैं, या मेरे पास जो अकाउंट है यू कैन सेंड इट टू मी एंड आई विल अपलोड इट ऑन माय अकाउंट. Okay, so but idea is that we upload our apps on our Play Store account. So what I would, if you वही मैंने कहा कि इस हफ्ते we will be developing 5 apps in previous, 5 apps in this class, 5 apps in next week. So by the end of this course you will have 20 to 30 different apps developed, and if you deploy all these apps it will already give you a good amount of standing ground for your career as well. So it's essential you follow. For that particular purpose that you need to deploy an app on your Google Play Store, it requires कि आप यहाँ पे example नहीं दिए हो. It requires that your package name doesn't have example. You can change it, refactor it later on as well, but it is always recommended that since you know that you will be deploying this app on your what we refer to online Play Store, so it requires that it should not be example. So I gave it a particular package name. Any package name would work fine. Then again, the last will be your folder name, your location. Java is my language, and Android 5 Lollipop is what we have been using in previous classes. I would be continuing from there. Once I click on finish, now my app status is basically created, and it will go and start the app. So again, be patient with Android. It takes few minutes and certain time to display your code on the portal. Okay, once it is done, let me just close the tip. I'm waiting for this Android hierarchy to appear. Meanwhile, it appears if you come into main activity.java, which is already loaded, you will see this that onCreate event is already there. Okay, this is the event that is from this life cycle. The first onCreate button has already been created for us by the Android Studio. In fact, all other events are already there. They've just shown us this one event, but all other events are also there. They are also already performing various different events now. So since onCreate is already created,
we will not tamper with this. I will just come here and I will create the remaining events. So I will say protected void on start. Okay, on start event. So on start is basically my another event. We have on create, we create on start. I use the modifier for protected because again I saw that's also using protected. Void is the no return type and on start event. So this is the simple method that we have used within our code. Okay, so finally this is loading up. Load up, load up, load up. Okay, so it's already loaded up now. Okay, so we create on start event. Now as soon as we do that, you see there's an underlying red line here. There is a red arrow here and there is a red line at this area here as well. So there are three indications that you have an error in your code. Now Android Studio is magical in terms of resolving errors as well. Okay, be very clear about this. Android Studio is magical when you try to resolve errors. If you're working with Java और error आ गया तो भाई फिर हम सर का दर्द हो जाता है यार error कहाँ से निकलेगा. C++ में error आ गया तो हमें बड़ी सोचना पड़ता है कि हमने क्या गलती की है. Android Studio की सबसे कमाल बात ये है that it gives you the solution that you have an error और that इस error को resolve करने के लिए इसका solution ये है. So what we need to do simply is we come here. If there's a red line, hover your cursor over this red line. Okay, you will automatically get a message that overriding method should call to super onStart. So it tells you the tip क्या there is an error और उसमें क्या गलती आपने की है. What is the mistake that you have made in this? And how to correct it? It says add super call. So it gives the solution itself. That's why we say it's a magical thing. Very easy for us to follow. So all we do is we just click on this button. Automatically my super.onStart has been executed. Now why super? Because we say these methods are already built into the Android lifecycle. Every app has these methods by default, whether you insert them or not. These apps are already available within app activity and parent class of this. So in our parent class, these methods are already there, which we have inherited, and they are by default included in our code. All the code required for these events are already written. But once you override these methods in your code, now it requires that you need to access the super class. So this is this condition of inheritance. Sorry. Okay. So this is inheritance. When we do inheritance, we use method overloading and overriding. This is method overriding. We are overriding the onStart method that is present in my super class. So this is a method that is already declared in my parent class. I'm declaring the same method in my child class. And that method requires that you call your super class method as well. Super.onStart. By doing so, we are telling that we are overriding the parent method. So once this is done, now there are two ways we generate the log in HTML or we generate the log in Android. Okay. So if you are in Android, there are two ways of doing it. First is log. We use the capital log log.I. Okay, this is similar to print statement. So if you are doing C++, we use cout, C language print. Python, we use a print statement. Similarly, in Android Studio, we use a log statement. Okay, within log, basically there are two things that we provide. First, the state. In other words, the log name. In other words, log name, and then comma, and then we give the message that we want to print. So for example, on start activity started. Okay, so we said on start. Okay, I have spelling mistakes in this one. Let me just come here. On start activity started. Okay, so see this, it's again giving me an error here. Okay, there is an error in this log file. So what this is basically trying to tell you is that it's not able to find the log file. It cannot resolve symbol log. What is resolved? This is a class name that's already there, but we need to import the class statement. So it says that import the class, and now you see this import statement as again. So that's what I say in Android Studio, it's magical in terms of resolving errors. So if you're working with errors, if you encounter errors, you just click on this arrow and you can use it. Or click on the word and balloon will pop up and you can resolve that error as well. So it's magical in terms of that. So this is one way of resolving errors. Okay. Second, this is one way of displaying the output. So log I is basically a log statement that prints the output on a terminal called logcat. Okay, at this bottom you will find a logcat window. If you click on it, we get a logcat. Now log I has something called tag name, log name,
This is the name because when you execute the code, there are hundreds of logs being generated. So using this name, we can search the log file. Okay, and then we generate the code here. Other way of doing it on the app is basically something called toast, T-O-A-S-T, toast dot make toast. ये वो चाय बिस्किट वाला टोस्ट नहीं है, ये अलग ही टोस्ट है. ये टोस्ट कहता है कि भाई जो इट्स एन वर्ड, दिस टोस्ट रिक्वायर्स दैट जो लॉग आपकी इस वक्त कंसोल पर आ रही है वो यूं समझो कि आपकी एंड्रॉइड पे आएगी. तो अगर आप आउटपुट एंड्रॉइड पे एरर देखना चाह रहे हैं तो जस्ट लाइक अ लॉग, जस्ट लाइक अ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, ये एक आपके एंड्रॉइड पे आ जाएगा. आई विल शो यू. तो मैं दोनों इस्तेमाल एक्चुअली करना चाह रहा हूँ. तो व्हाट वी डू अगेन इन दिस केस इज मैं यहाँ पे दिस दे दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूंगा जो मुझे प्रिंट कराना है. फॉर एग्जांपल ऑन START स्टार्ट एक्टिविटी started and then comma to toast dot leng length long कर देते हैं, ठीक है, और फिर डॉट शो कर दिए. Okay, so this is basically a log statement that will display output on your log within Android Studio. तो ऐप वाले को कुछ पता नहीं चलेगा. अगर आपको ऐप में कुछ दिखाना है तो फिर हम यहाँ पे टोस्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं. टोस्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, बट द आई डोंट नो व्हाई दे यूज वर्ड टोस्ट, सॉरी, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये बेसिकली आपके मोबाइल के ऊपर आउटपुट प्रिंट कर देगी आपके एज अ पॉपअप मैसेज के तौर पर. तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट के टेस्ट बनाना है, उसका भी हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि टेस्ट कहाँ पे नजर आना चाहिए. दिस रिफर्स टू माई करंट विंडो ऑब्जेक्ट. तो जो करंट लेआउट है उसी के ऊपर मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट पे आपने विंडो दिखाना है, ठीक है. अगेन जावा की कॉमन एक मिनट हम यूज करते हैं. ऑन स्टार्ट इज द मैसेज, और फिर उस टेस्ट की जो लेंथ है, जो पॉपअप मेन्यू आएगा उसकी लेंथ हम कितनी रखें. शॉर्ट भी रख सकते हैं, लॉन्ग भी रख सकते हैं. डॉट शो मेथड कर सकते हैं, ठीक. ये दो तरीके हुए. अब स्टार्ट कर दिया मैंने, इसी को पेस्ट किया यहाँ पे. ऑन स्टार्ट के बाद अगला हमारे पास मेथड था ऑन रेज्यूमे, ठीक है. तो मैं एंड्रॉइड पर आ गया और ऑन RESUME रेज्यूम मेथड मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ऑन RESUME रेज्यूम, और यहाँ पे हमने मेथड दे दिया फॉर एग्जांपल RESUME रेज्यूम. ओके, तो हमारे पास ये एक्टिविटी आ गई. अब यहाँ भी वो ये कह रहा है कि भाई ऐड सुपर कॉल टू योर मेथड, और इसमें मैं ये पेरेंट हटा दूंगा ऑन स्टार्ट. तो ऑन रिज्यूमे मेथड भी हमारे पास आ गया, वेरी सिंपली गिवन, ठीक. इसी तरह से अब व्हाट वी डू इज वी कम बैक, वी पेस्ट द कोड. ऑन रिज्यूमे के बाद हमारे पास अगला मेथड है ऑन पॉज का. अब मैं ये पॉज मेथड यहाँ पे दे दूंगा, PAUSE पॉज, ठीक है. इसको भी फिर हमने ऑन PAUSE पॉज कर दिया, और फिर यहाँ पे भी जो वर्ड था मेरा, इसको हमने PAUSE पॉज कर दिया, इसको भी हमने PAUSE पॉज कर दिया, ठीक. इसी तरह से फिर मैंने इस मेथड को दोबारा कॉपी कर दिया, एंड देन नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड मेथड ऑन स्टॉप. तो आई विल यूज ऑन STOP स्टॉप, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. एंड दिस अगेन ऑन स्टॉप मेथड हो जाएगा, ओवरराइट कर दिया हमने. एंड ये मेथड को भी मैं चेंज कर देता हूँ ऑन स्टॉप, एंड दिस मेथड अगेन गोज बैक टू ऑन स्टॉप. ओके, so now we have onCreate, onResume, and all these methods are there. तो मैं onCreate का जो इवेंट जो पहले बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, इसके कोड के लास्ट में आऊंगा. इधर भी मैंने अपनी दोनों लॉग फाइल्स ऐड कर दी, ठीक है. और यहाँ पे हमने दे दिया onCreate क्रिएट, और इधर भी हमने नाम दे दिया onCreate क्रिएट, ठीक. तो हमने बेसिकली onCreate, onStart, onResume, these are methods. Now again these methods are already built in our default parent class. हमने सर पोज मेथड सही लिखा हुआ है, सुपर पोज डॉट. यस, गलत लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक. PAUSE पॉज, PAUSE पॉज, PAUSE पॉज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है. इसी तरह से आई थिंक फाइनली हमारे पास एक मेथड आ जाएगा डिस्ट्रॉय का, बट डिस्ट्रॉय अभी आई डोंट थिंक हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे. लेट मी जस्ट राइट इट, DESTROY ऑन डिस्ट्रॉय, DESTROY डिस्ट्रॉय, ठीक है. और इसको भी, तो ये बेसिकली हमने हमारे पास क्या हुई, हमने एक मेथड लिखा था, एक एक्टिविटीज उठाई, उन्हीं एक्टिविटीज मेथड्स को ओवरराइड किया जो बाय डिफॉल्ट मौजूद है. तो ऑन डिस्ट्रॉय जब हम कॉल कर रहे हैं सुपर, सुपर का मतलब मेरे पेरेंट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय का,
या सुपर स्टार्ट का या पॉज का, वो सारा का सारा कोड एज इट इज इस्तेमाल करना है, ठीक। वो सारा का सारा कोड मेरे पास भी इनहेरिट करके ले आओ, और उसमें ये 2 लाइनें भी ऐड करो। तो वी आर इनहेरिटिंग एंड देन एक्सटेंडिंग इट, तो इसीलिए सुपर लिखना लाजमी है, वरना फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। वंस वी हैव दैट, नाउ स्टार्ट अवर मोबाइल एंड्रॉइड एग्जीक्यूशन। वंस यू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, यू विल फाइंड के ये सारा हमारे पास ग्रेडल रन हुआ। अगेन ग्रेडल का भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ग्रेडल बेसिकली इज एन API within our Android Studio that takes our code, that takes our user interface, that takes our XML and Java file and builds the final APK for Android. Okay, and then it runs the simulator, it installs the APK जो अभी उसने build की थी, वो simulator में install करे, और फिर उस simulator के अंदर APK को खुद ब खुद execute भी करता है। So it performs these 2-3 different tasks. So Gradle जो है basically is just like a software within our Android Studio जो कि कोड को कन्वर्ट करके कंपाइल करके रन करने में मदद देता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, ठीक है। सो वंस माय एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड, यू कैन सी दिस हंड्रेड्स ऑफ लॉग्स आर बीइंग जनरेटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे नो लॉग कैट करके विंडो खोली हुई है, बहुत सारी लॉग्स हमारे पास जनरेट हो रही है। सो वी जस्ट वेट टिल दिस ग्रेडल बिल्डिंग इज रनिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड फिनिश हो जाता है, ठीक है। स्कैनिंग फाइल्स, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो लेट इट इंस्टॉल, लेट इट लॉन्च द ऐप। ये करने के बाद जब ऐप आपकी लॉन्च हो गई, here we get the message launch succeeded. Okay, so once the app is recorded, now you see on resume activity, यहाँ पे आपका मैसेज आ गया। Okay, if I come into the logcat पे आके मैंने यहाँ पे log name दिया था वर्ड, तो मैं यहीं पे भी log name दूंगा। तो जो ही मैंने log name लिखा, तो सिर्फ log name वाली जो logs थी वो आ गई। तो log.i में जो हम टैग देते हैं, ये एक्चुअली टैग्स हम सर्चिंग के लिए देते हैं कि मैं अपने यहाँ पे बड़ी आराम से मैं जो मुझे लॉग चाहिए था मैं ढूंढ सकूं। तो बाकी सारे लॉग्स हाइड हो गए, मैंने सिर्फ लॉग नेम लिखा, तो मेरे पास लॉग नेम आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, सेम थिंग, जो ही हमारी ऐप स्टार्ट हुई, ठीक, तो वी गेट अ लॉग स्टार्टेड एक्टिविटी। एज सून एज इट स्टार्टेड, लॉग ऑन क्रिएट इवेंट एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम एग्जीक्यूट हुआ। द फर्स्ट टाइम यू रन, all these 3 events are executed in a sequence: on create, on start, on resume. Then once they are executed, now let's go back into the Android app. यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यूं कर दिया, मल्टीटास्किंग में गए। तो जो ही हम मल्टीटास्किंग में गए, सी ऑन पॉज, और उसने फिर ऑन स्टॉप इवेंट कॉल कर दिया। ये इवेंट पॉज हुआ और स्टॉप हुआ। मैंने वापस अपने इवेंट पे क्लिक किया, तो देखो उसने फिर उसको स्टार्ट किया और रेज्यूम किया। अब ऑन क्रिएट इवेंट कॉल नहीं हुआ जो पहले हुआ था। On create is didn't execute it because it was already created. The app was already created. You just had paused the event and stopped it. So as soon as you regain it, it again went back to start and resume mode. So you just need to understand this concept so that once you're developing app, you can configure these methods to perform various different tasks for your app. So it depends, your app can be anything. Then again, if I come back here, it goes back into the pause and stop state. It comes, if I sorry again one time, and the same message are being displayed here. जो toast का था, वो basically if I come here, you can see this toast अब यहाँ पे हमारे पास. If I go again, come back, वो toast message यहाँ पे हमारे पास आने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, इसीलिए sometimes हम log use करते हैं, क्योंकि जो activities हैं इनके toast सही शायद generate नहीं हो रहे या whatever happens. So if I go back, my app is now again in pause mode and stop mode. Okay, so these are basic different activities that we need to understand which we perform. So if I go back here again in VS software, I think if this is the same app, no, this is a different app. Go back, come here and scroll. This was my app. No, this is not the app. Where's my VS software morning? So these are, oh, this one, here's my app. So if I start the app, now on resume and start activity, on start activity is started. On resume, these are the toasts that we were talking about. On resume activity started. So we get a pop-up message here. So now we on resume stop. So if I come back here and this is my app. Okay, so if I close all other apps so I don't get confused, I again on stop event, I again click on it, on start activity has started. Again, I get my event back. So these are toasts. On resume, on activity, these are messages. So this life cycle follows as we go along, that which activity you are doing. Finally, when you close the app, we got that on destroy event will be executed when you kill everything. So if I come back here and I close it, on stop, every activity gets executed, and I close, on destroy activity started.
which will indicate your app is now being destroyed. Okay, so clear. So hopefully this life cycle is clear and understandable, and now you follow along. We don't actually use it for every single application, but we try to develop an application around it. Okay, so I hope you understand. Any questions and any confusions? Chats, sorry, message. Toast bhi hai. Yes, toast bhi hai. So okay, toast is also there. You can use toast. We use toast as a print statement when we want to see the display on the mobile device. We use log statement when we want to just debug the code on our Android Studio. Okay, and we don't want any error message popping up on the mobile device. So log is also there, and log.I and toast is also there. Okay, toast displays message on the mobile phone as a pop-up at the bottom, and log displays the message on the logcat window within your Android Studio. Okay, and for log we use the log name. For toast we use the context, that on which context menu we basically are supposed to use it. In other words, app के कौन सी जो layout है वहां पे नजर आना चाहिए. ठीक है, so I hope थोड़ी सी ये लाइफ साइकिल, थोड़ा सा ये कोड का स्ट्रक्चर, लॉग और टोस्ट दो स्टेटमेंट्स आपको समझ में आई हो. हम इनको इस्तेमाल करते हैं, आगे आपको और करेंगे. अब यही आपका इस हफ्ते का पहला टास्क होगा, दैट यू हैव टू डेवलप a very simple Android lifecycle app. ठीक है, take the screenshots of that app from your simulator, from your code, display, save it as your PDF, and then make sure every display has your name on it. So when you are creating an app, instead of this hello world, make sure you have your name on it. Assalamualaikum, sir. Every app has it on. So if you come here, यहाँ पे hello world लिखा, change it to your name and roll number, so that when you take a screenshot, it has your name and roll number. So I know कि everybody has done it yourself, किसी ने copy paste नहीं किया हो सर ऐसा नहीं. ठीक है, चलें.